Yes, and Hyper-V is left up. Yes, sir. Okay. First question. What are the ways by which we install operating system to our machine? What are the ways are there? How many ways are there? Eh? क्या क्या है? 3, 2 बोलने से होगा? One USB and one other CD drive and another directory. Directory. मतलब फाइल कहाँ है? हैं? VM में बोल रहे हैं ना सर आप? नहीं. OS. Physical machine. अल्लाह अभी machine अंदर ना VM machine अंदर. चलो फर्स्ट आंसर सबसे पहले बताओ. How many ways are there? Two ways. What? ISO file. ISO file. And NCD DVD. Yes, once an answer question. हैं? Question once repeat, sir. वो बोलो समझो क्या क्वेश्चन है? बोलो. What are the ways we can install OS on a machine? Physical machine. One server, one source. How many ways? OS instruction. Extra machine. Four methods. हैं? नहीं बता. Confusion हो रहा है. मान लो आपके सामने एक ब्लैंक सिस्टम है पड़ा हुआ है. Yes, sir. And you need to install operating system over there. Okay. So what are the ways are there how you will install the OS there? ISO file like sir. ISO file. और So disk. disk. हाँ. One server file, one server file. Yes, one OS. Server file and OS file. OS file. हाँ. Yeah. Same server file OS file. USB flash drive and CD drive. USB flash drive, CD drive. Same copy paste. USB and CD. Copy paste. Okay. सबसे पहली बात बेसिक भूल गए हैं? सर्वर ओएस एंड ओएस फाइल क्या है ये? व्हाट इज सर्वर ओएस एंड ओएस फाइल? It's OS. For example, you have one laptop, you need to install OS over there. Yes, sir. So you will search for server OS and OS file. Or what? What you will do? Search for operating system needs to be installed in laptop. For example, Windows 10. An ISO file, what ISO file? It is installed. ISO file you will install directly, you will throw. Yes, this is the file. Go. Huh? There are 3 ways are there, not 2 ways. One is USB drive. By creating bootable USB with the help of ISO image file. Don't just simply say ISO image file. With the help of ISO image file, you will create a bootable USB drive so that you can install OS. Second, CD DVD. एकदम पहले, like from now 6 years, 7 years before, you used to get OS CDs. Yes, sir. So you have to insert a CD, then you have to install. Nowadays, CD तो है ही नहीं, direct ISO ही है. So this is the second, with the help of CD DVD. And one more is there.
That is called network boot. Network boot. How USB works and CD/DVD works, you know, right? I don't have to explain. I know. Explain, sir. I can't. Go to A plus. A plus not. A plus not done. Who have done A plus here? Even I have not done, sir. I know it. A plus who have done? You have done. You also done, no? Then how we can know, sir? This step. This installation, OS installation and all, I have done in class 6. When I was in class 6, for dismantle, assembling, everything I have done. I was maintaining my school systems, sir. Interest. So, you need to explore yourself. Don't sit and someone will explain you. Search how to do, how to reassemble, how to install OS, how to dual boot. If we are like that, we should sit at home and we should. That is the main thing. Then why should we come here? So, यहाँ पे आओगे, you will learn more. अरे आओ इधर. वहाँ काहे बैठे हो? इधर आओ. बैठे. आज मजा आ रहा है. क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. Q&A सेशन चल रहा है. बैठ जा. Few things you need to do it by yourself. It's not like you have to depend on others. These are the small things that you can learn by home, sitting at home also. But there are few things which is advanced level which you don't get in internet that you can learn. That's the thing. But installation of OS with the help of USB, you तो कहीं पे भी in YouTube videos you will get, so many blogs you will get. ये अपने से कर सकते हैं. That you can do it by yourself. So, main thing is USB, CD, DVD. This is the two ways. Another way is what? Network boot. तो network boot में क्या होता है? Same thing like we installed that. OS will be stored somewhere else, and OS will be installed over the network. मतलब ISO file. The files will be uploaded in a server, and all the clients which is there in a network will get the operating system over the network. From network itself, this OS will be pushed to client. That is network boot. That's why it is named as network boot. Through a network, you are going to install OS. Got? Yes, sir. Simple, short. इससे और simple नहीं कर सकते. Installing operating system over a network is called network boot. How? Serve with the help of server. And WDS is what? Windows Deployment Service. And WDS is what? Network. The network boot we say no, where we will upload the OS file. In WDS only we upload. WDS abbreviation, sir? Windows Deployment Service. पता है याद है? Okay. WDS. आप ही करो आज. वो नहीं कर दो आज. चल मैं करता हूँ. लॉगिन आहे का? प्रोसेस मध्ये पता एक्सप्लेन Client नाही. यही तो. Others are So logged in. Windows deployment service. Windows Deployment Service. Now that counter आहे चार्जिंग सर्वर आपको OS देगा. Close ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅದು ವಿಷಯ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ Install.vim वो सब वगैरह था. First paper easy है. Second, third थोड़ा मुश्किल है. ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ टूल का बता दो इसको स्क्रीन डिप्लॉयमेंट सर्विस जैसे तैसे समझ. अभी ठीक है. वेंकटेश है क्या सर? थे अभी सीधा हुआ है. बहुत गाली सुनने के बाद. Now what we need to do? WDS is a role that we need to install it.
Okay, it's a role. So, how to install? Add new roles and features. Add roles and features. Add roles and features. Next, next, next. Now here you will see this, the Windows deployment service. Here description it is written, it is a service provides a simplified secure means of rapidly and remotely deploying Windows operating systems to computers over the network. How to लिख सकते टिक करके add features. Next, 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 install. Oh yes, Hyper-V के लिए 26 इंच ये होगा. You're installing another OS, sir? For a Hyper-V. Because Hyper-V in the ISO which I have, that 2012, there is some components are missing. So that's why Hyper-V cannot be installed. It will be installed, but you cannot run it. So that's why 2016 में करा. But it's not like 2012 में नहीं होता. It happens in 2012. But ISO version that I have, there is some problem. आपको करा था क्या? आज ही कराएंगे WDS और Hyper-V दोनों ही करेंगे. अच्छा फर्स्ट पेपर खत्म कर ही देंगे. Is recording start? Recording is going on? यहाँ से आ रही क्यों? Outside, sir. क्यों यहाँ पे से सीधा जेपी नगर यहाँ से कहाँ पे? दयानंद सागर के सामने ही, कॉलेज के सामने ही. नहीं वहाँ से थोड़ा बात अच्छे कैसे है मतलब ज़्यादा है कम है कि मतलब अच्छा है कम भी है और फ्लैट वगैरह भी सब न्यू ही लगता है अच्छे ही है डिपॉजिट कम है. आपका कितना रेंट और चल रहा है 1 BHK के? 1 BHK के लिए है तो 5200 5200 सिर्फ? क्या बोल रहे हो? बढ़िया है. और कितना डिपॉजिट भरना पड़ा? 30,000 कैसा है रूम? बड़ा बड़ा नहीं इससे थोड़ा सा छोटा होगा दो रूम में से और ज्यादा बॉटल वगैरह वहीं पे आएंगे. Okay, so installation is done, right? Yes, sir. So close it. अभी क्या करना है? Now what we need to do is
Tools. Go to WDS, Windows Deployment Service. Now here you can see, if I click on servers, I will see DC01 reliance.com. If I click on this, you will see Windows Deployment Service not configured. Configure नहीं करना पड़ेगा. How to do it? Right click on DC01. You can see configure server. Click on configure server. Next. Now here two options comes, integrated with Active Directory and standalone server. दोनों का अलग meaning है. Integrated with Active Directory, when we go with this option, when you are going to configure this WDS for your own building, अपने लिए. Because if you go with the first part, if any client gets OS from this network boot, you don't have to go there manually and join domain to your server. It will automatically will happen. Usually what we do, we go to system properties, change name, go to domain, give domain, manually we have to do, right? If you go with the first option, you don't have to do manually. When it will install, at that time only it will be connected to the domain. ये कब करना है? ये only when you are doing in your own building or your own environment. If you are going doing for all branches, यहाँ Bangalore, Delhi, Mumbai, somewhere if that branches are available and it is in the same network, at that time you have to go with the standalone. Standalone means usually how we install OS like that, manual. But its most recommended is go with a standalone. Even if you are in the same environment in your building also, go with standalone. Don't go with integrated. So standalone. So here description is also there for integrated. This server is a member of an Active Directory domain service or domain controller for an ADDS domain. Directly it will be joined. You don't have to do anything. If it's standalone, configure the server so that it is standalone, operating independently of Active Directory workgroup. So next, this volume problem will come because I have only given 60 GB, so it requires minimum 100 GB. So just click on yes. Next, three options. Do not respond to any client. If you want to create this WDS but you don't want to activate right now, so you go with do not respond. If you want to make respond to known client, that is respond to known client computer, that means whoever the system which is already in a domain, already joined to Active Directory and server knows this client. Only for those clients only this WDS will work. Okay? Respond to client computers known and unknown. For example, new system is joined to the network which doesn't have any OS. It's not connected to Active Directory also. For those systems, you need to go with the third. So here you need to define what you want. So I want both known and unknown. Then require administrator approval before accepting WDS configuration. नहीं तो कोई भी फटाक से कर लेगा. Everyone will come and चलो WDS कर ले. Install the operating system. That you don't have to do. You have to check that. So that if it is required, then only. Otherwise, no need. Next, it will configure. Done. Finish. Now when it is configured, you will see these things. Install images, boot images, pending device, prestige device, multicast transmission drivers. Out of this two is important. Install images and boot images. यही दो चीजें हैं जिसपे आप OS डालोगे. These two are the main thing where you put the OS. Okay. Now
Here one thing is there. You cannot use all operating system. Only Windows. Clear? Windows. That's it. No Linux, no Mac, nothing. That also you have some conditions. If it is Windows also there is some conditions. क्या हो गया? So what is the condition? Your ISO image file that you are going to download. In that ISO image file, when you will extract that image file, you will get some folders. There you will get something called sources. Sources folder will be there. Inside the sources folder, there will be two files, which is very important. One is install.vim file. Install.vim file, yeah. And one is boot.vim file. ये दो ही चीज है जिससे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो. Now condition is your ISO should have this both files. If it doesn't have, you can't upload an image file over here. Why? Boot.vim file you will get everywhere. But in some ISOs you may get something called install.esd. Now you will get this .esd when if that system, that ISO image file is edited, not directly came from CD. We get some OS, no, some black edition, some designed giver edition. होता है ना ISO image file like customized, cracked, pre-activated. Those kind of OS you will not get this .esd. You will get this ESD file. When you get fresh image file that is freshly taken from directly from DVD, original DVD, there only you will get this installed. Because to customize OS files, you need to make this .vim to ESD. तभी वो कस्टमाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा. वो थोड़ा अलग डिपार्टमेंट है. But moral of the story is, you need one ISO where install.vim file should present and boot.vim file should present. That's it. If it is not there, you cannot upload it. So I have one image file of Windows 8.1 where I have this both files. और मुश्किल से ढूंढा है. Because nowadays it's very difficult. Until unless you don't purchase, it's very difficult to get this install.vim and boot.vim base image file. Everything you will get in .esd only. But you have to find, then only you will get. But मुश्किल से मिला. So what we will do is, now to drag and bring here, extracting that file, it will take a lot of time. Instead of that, what I will do, I will just simply mount that ISO image file to my VM. Now how to mount it? Simple, just go to your VM setting. CD DVD. Here right now it's mounted with Windows Server 2016, right? So I will mount it with Windows 8.1. So browse. Here. Windows 8.1. Open. Attached. Click on OK. Again. So now let's see whether we have or not. So right click, open. This is the sources folder. Yes, sir. Now here I need to check install.vim and
boot.vim. So let's check. Yes, sir. Install. In Vim file, here now. Vim file is there, and let's see about a boot file, boot.vim. Correct? So we have got our two main files, so we can upload them. So go to Windows deployment. Now first thing first, what we need to upload? Install. It's written install images. That means we need to upload install.vim file. Yes, sir. So right click, I'm installing. add install image. You can give any name over here. What is the group name will be? So I will give OS group. Next, file location, where your install.vim file located. So browse this PC, in D drive, under sources. So you will see automatically it will come this Vim files. So I have to upload which one? Install.vim. Open. Done. Next, now it will ask which version of 8.1 you want. Either Pro or Home. What? So obviously Pro we don't need require Home. So just untick this Home part and keep this 8.1 Pro checked. That means only 8.1 Pro will be uploaded. At a point of when it will be, when the client will get to install, at that time it will not give you options that you have to install Pro or Home or what. Here you have selected that one only. Next, 8.1 Pro. It was not uploaded. Now my question is, in here, this is something out of syllabus question. Don't need to worry. Here you can see so many things are there, right? But in server we are uploading only these two files. And with these two files only you are installing OS. What about the other files? What is the use? Because if you go to sources, you will see so many things. These all are important to install OS. But we just upload install.vim and boot.vim and that's it. And your OS will be installed. So instead of taking so many these files, if we create only image file of this both, it's enough, no? Is it enough? Presently it is. Because यही दो ही चीज तो चाहिए. Yes, sir. Technically देखा जाए, if we see technically these two files are only main, others are not, because in server I am uploading install.vim and boot.vim. Finished. I am not uploading these files which is coming here extra. But still OS is installed. No? Out of order. It's working. Then what is the use of these files? Remaining files. Remaining files? I think remaining files should be used another way. Remaining files can be used Another way. in another way. We need only these two files now. Hmm. That's why we are using these two. Then what is the use of these others? While installing that, again it will be created in that one. Again it will be created a All copy. this. All this. That file, that both install and boot file will take files from this to install. To install. लेकिन मैं तो in server I am not uploading anything of this. Then how it will take help? I think It will it take directly, will sir. How? will be created, sir. The file will go to that From all install. of those files, we have to choose which is needed to us. That's it. Install and boot will be knowing the directory where it is present. Not be knowing. If I remove this also it will install. Boot is also will install. When I CD, for example, simple, I have inserted a CD in physical and my physical server.
From that CD, I have uploaded this install.vim and boot.vim. Then I taken out the CD. Up to ये सब files is not available because I've taken out the CD. But OS will be installed. It will work fine. Then why we need these all junk files which is there? If only install.vim and boot.vim is enough. To run operations, right, sir? Those are DLL files. लेकिन है ही नहीं तो DLL फाइल होके क्या फायदा? Windows install होने के बाद काम करना चाहिए ना सर? कैसे काम करेगा? अगर एक्सेस ही नहीं मिलेगा कैसे काम करेगा? It will not work after installing. It will install, it will not work. इसका आंसर मुझे आज तक नहीं मिला. ये इंटरव्यू में मुझे पूछा गया. सर्वर के क्लाउड का एक इंटरव्यू था वहाँ पे मुझे ये पूछा गया. This question was asked. Like in WDS, मुझे पहले पूछा like you know WDS environment. Yes, okay. So in WDS, what we do, we upload two files, that is install.vim and boot.vim. Now, when we install in image file, there are so many files are present. Out of that, only the work is install.vim and boot.vim that we upload, and successfully installation has been done, and you can see your operating system is running. Now my question is, if only install.vim and boot.vim will work for installation of OS, then what is the use of other files? Why they have created so many files? What is the use? और मेरा दिमाग उड़ गया होगा. ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था. We never think like that. But when question comes something like this, it leave your mind. मैं 5 मिनट में मुंह फाड़ के उनको देख रहा हूँ. ये क्या क्वेश्चन है? What type of question is this? लेकिन इसका आंसर मुझे कभी नहीं मिला. In internet also I didn't get. मिला ही नहीं. लेकिन वो इंटरव्यू ने बोला कि why? इनका मुझे नहीं पता. भगवान जाने. इसलिए मैं पूछा ही. पता है कि नहीं आप लोगों को? ऐसे टाइप का इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते हैं सर क्लाउड में. If you don't know, we ask to interview. They will not ask, they will not give answer only. Why he was asking? पूछो इंटरव्यू को जाके पूछो, उसके बाद पूरा कचरा करके भेजेंगे. वो ये this is the door, go We need to know, sir. study. They will say that one only. Study. Where? From where? Google. Research. Practice. Everything is only they will say. Okay, so Windows 8.1 is uploaded. Input images, what we need to upload? Boot.vim. In the same way, add boot image, locate. Next, now the important thing. Don't just simply keep the same default name. Why? Because now I am uploading Windows 8. I can upload multiple OS. Windows 8, 7, 10, XP, Vista, whatever जो डालना डालते रहो. Server, everything. Now if you don't change here, when boot you are uploading, at that time if you don't change the name of the image, in client side, when they are going to install it, they will get options, right? Which OS you want to install. There you will not know only which one is Windows 7 and Windows 8. If you keep same Microsoft Windows setup, all will come in this name only. So that's why when you upload boot.vim, at that time when it comes that image name, give the name of your OS. If it is Windows 10, give Windows 10. If it is Windows 8, Windows 8. यहाँ बहुत गलती होती है. In real time, most of the mistakes done here. जल्दबाजी में, like in a hurry, we don't see, we just upload it, finish. And when it goes to the client, at that time, problem comes. That time what? You need to predict. I have uploaded this at first, maybe it's Windows 10. So first one is Windows 10, second one is Windows, like that we have to predict. So always change it.
8.1 Pro. Win 8.1 Pro. So this 8.1 Pro will be flashed in there in client side. Win 8.1 Pro. So if I see, I will know this one is image of 8.1. Image description. If you are good enough in writing descriptions, you can write. Otherwise, skip. Next. Done. सिस्टम का है आपका सिस्टम का सर्विस सेंटर दिल्ली गए भेज दिया कितना हाँ लास्ट वीक मिले उन्होंने बोला है कि अगर ठीक नहीं हुआ तो नया प्रोडक्ट ऐसे सेंड कर देंगे डेटा ट्रांसफर आई होप नहीं है पुराना वाला ना है 6 कीबोर्ड चेंज कर लिया अभी तक चेंज ठीक नहीं हुआ 6 मदरबोर्ड आए रेक्टिफाई नहीं हुआ और मैंने पहले हाँ क्या क्या और सब लेजेंड लेवल के छोटे बड़े नहीं वो तो खेला है मेरे सिस्टम में लोड होने को कम से कम 15 मिनट हाँ हीट फर्स्ट टाइम में थोड़ा कम लगता है नहीं हर बार है इतना heavy नहीं हीट खेला है मैंने खत्म किया है लेकिन वो फर्स्ट टाइम ही तो इतना ही हो मतलब लोड होता है उसके बाद तो नहीं है फार क्राई 3 आ रहा है फ्री में फार क्राई 3 फ्री में दे रहे हैं ऑनलाइन ले लो मैंने इंस्टॉल करके रखा है वो वाला एचपी में तो उसको पोर्ट करके उसमें घुसाऊंगा मोबाइल में फार क्राई 3 फ्री है पूरा फुल ऑनलाइन गेम दे है प्लीज नया आया था वाईफाई लगाया लगा लो यहाँ पे हाँ लगा लो ऑब्वियसली ये चाहिए होगा ना डाउनलोड चाहिए इसलिए तो बोला लगा लो छोटा सा मतलब मिनिमल अमाउंट ठीक है अमाउंट है स्पेक्ट्रा लगा सकते तो अच्छा था क्या स्पीड है एयरटेल का मतलब मेरे जो एरिया में रहता उतना ही एरिया में भी आसपास वाले सारे वहीं पे नहीं ये कैसा नेटवर्क होता है सारे के सारे एरिया में एक छोटा सा नगर सेवक जैसे नहीं बोलो नहीं लगा लेते उसने परमिशन नहीं दिया क्या ही बोले और अभी देखो ये बाद में दिखाऊंगा अभी नहीं देखो वेट मुझे ट्रबल शूटिंग दिखाना है प्रॉब्लम दिखाना है alright so our WDS is ready okay now how to test so we need to create one blank VM अभी यहाँ पे किसको bare metal machine के बारे में पता है ऐसा राइपर वी टाइप 1 जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं क्लाइंट के लिए हम यूज नहीं कर सकते what is bare metal machine bare machine is not OS copy paste what is bare metal machine फर्स्ट
एमसी से फर्स्ट प्लेस मुझे लगा लेवा सर्वर है। नहीं सर So we can't create any bare metal machine now, so we will create blank VM. Blank VM in the sense everything will be there, but ISO will be not there. No worries. Except OS. नेक्स्ट एट पॉइंट वन प्रो ये ऐसे भी हो रहा नहीं है। 2 GB. So I am not attaching any ISO. It's auto detect. Now, here one thing I need to make sure that it should be in the same network. If it is not in the same network, WDS cannot deploy. Simple concept. क्या दिया था मैंने भूल गया। डार्क था ना। ठीक है चलो। Finish. All right. Now let's test our WDS environment whether it works or not. So now, what is the requirement of WDS is DHCP. DHCP should be installed. WDS works with DHCP only. First of all, DHCP will deploy IP. When IP is received, obviously OS is not there, so WDS will detect that and through network boot, it will send OS. Okay. So what we have to do is just power on. So it's searching what? DSC It's searching DHCP. Lying MAC ID also we can see. Dancing. Disco. So when you do network boot, this is how it works. It will first search for DHCP. After that, it will search for OS. that's fresh machine अभी तक DHCP नहीं पकड़ा है। सेम नेटवर्क में है कि नहीं? सेम है सर Dark ही डाल दो। देखो what information you are getting? आईपी क्लाइंट आईपी आ गया Client IP received मास्क 192.168.1.13 mask subnet mask I have got. Yes. Server IP भी आ गया है. What is missing? PXE pre-executable file is missing. It means OS is missing. But we have uploaded WDS. We have configured. It should come, but it's not coming. Why? Because we didn't started WDS yet. वो बंद है. Just install. We need to start. Then only it will work. So what we have to do? Because ये मैं दिखाया क्योंकि ये चीज बहुत common mistake है. We create it, we leave it. Yes, sir. Here you can see it is in स्टॉप stop mode. So what we need to do? Right click, all task, start. Successfully started. Window. अब जाके करो. एंटर एंटर एंटर
आया F12 F3। हाँ यहाँ पे एक चीज है, मैग्नीफाई करने से बहुत दिक्कत होता है। दिखाने के लिए था। So when this F12 comes, at that time in your system maybe you have to keep on FN, shift FN, F12, F12, shift, something like that combination you have to see. Okay? मेरे को भी वही देखना पड़ेगा. So it's taking F12, 12, हाँ. क्या किया था? मैंने सिर्फ F12 दबाया आगे. Maybe in your system you have to press FN, function and F12 or shift a function F12, something like that. Function button, sir. But one thing you have to notice when you are pressing F12, this hand symbol should not be there. You should be inside VM. If you are not inside VM, no matter how much you click on F12, it will not work. It's in a physical machine. देखो आ रहा है? Installation is happening. Windows is coming. From where it's coming? From server. Through network. Here no ISO, nothing is there. It's directly coming from server. That is what WDS. Clear? And it is very useful tool in corporate because, for example, there is a client in Delhi. They want there are 5 systems which is not working, and in Bangalore you are there and they are contacting you. They send someone so that they can rectify it. Now going there, checking all the systems, network, everything, then taking out the drivers, softwares, installation, so many times. It will take a lot of time, correct? So instead of that, with the help of this WDS, you can instantly, without going also, from here you can deploy. One more example, if there is 100 system is there and you have to install. So for installation of one OS in one system, how much time it will take? Approx 45 to 1 hour. 45 1 hour नहीं लगेगा, लेकिन with configuration setting, driver करके 1 hour. For 100 PC, 100 hours. That means how many days? Almost half 3.5 months. 3.5 months. 4 to 5 days. 4 to 5 days. What are they? 4 to 5 days. 4 to 5 days. Also, you are not going to work 24 hours. तो उसमें भी थोड़ा कट होगा. That means 10 to 15 days it will take to configure 100 systems. Not really. लेकिन होता नहीं है, लेकिन जैसे पकड़. Now just imagine in 1 hour, if it is possible that in 1 hour you can install all 100 systems. Then instead of waiting for 10 to 15 days, you are doing that part in 1 hour with the help of WDS. That's why in environment, WDS is configured. Okay, so that's why you don't have to go install directly from server. You can deploy. So this is how what you can see. Next is coming from Windows Deployment Service. Now you are getting this part, authentication. Why it's coming? Because we have given a policy require administrator approval. Remember? Here you need to type your credential. Your credential means not administrator. For example, you have your system, you are installing. You have your credential which is given by domain, right? With that credential you have to log in. Administrator नहीं लगे आपने, आपको खुद का ही देना पड़ेगा. So for now I am giving administrator @ Microsoft क्या है? हो गया? @ है तो उसके पहले स्पेस आ गया. स्पेस है क्या? सर यहाँ पे जो यूजर क्रिएट लाइक क्लाइंट क्रिएट करके देना सर, वो उससे लॉगिन करना. हाँ, यूजर जो भी यूजर क्रिएट करते हो
For example, this laptop is client's. Client company से ये laptop दिया है. Something happened, so you need to reinstall the OS. You have your credential, na? Here you need to type the credential. Then you have to log in. ठीक है? Done. Now here you can see 8.1 is showing, right? If you don't change that, you will get something Microsoft that boot image file होता है ना वहाँ पे वो. तो बस next करो. Installation start. समझे? WDS simple but you need to practice. तो समझ में आ जाएगा concept. Clear? तो अभी मैं इसको install में नहीं डाल रहा हूँ, read करूँगा. टाइम ले जाएगा. So if you want, you can do it. This is WDS. Simple. थोड़ा 5 मिनट ब्रेक चाहिए? मुझे चाहिए सर. 5 मिनट ब्रेक ले लो. Then we will start Hyper-V. Small topic, 10 मिनट का काम है. Windows 8.1. Hey, you beautiful. Hey, not much. I have some confusions are there for software. सबसे बड़ा गलती किया है, biggest mistake. क्या किया? कौन सा फोन? Poco F3 GT. और बहुत बड़ा गलती कर दिया. ROG 5 तो 50,000 है. इतना बजट है नहीं. लेकिन 9 लेने का था. सबसे बड़ा गलती कर दी. क्या हुआ? हाँ. I'm trying to log in here. Saying something like this. Log on server. This server is on, sir. Did I do it wrong, sir? तुम्हें देखते हैं. अच्छा. DC01 ये वाला जो सिस्टम है इसको ज्वाइन करवाए थे. Yes, sir. Yes, sir. DC01 से. Sir, another file is there somewhere. What happened? This pendrive, sir. हाँ. कुछ है sir. नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है. प्रॉब्लम नहीं. ये फॉर्मेट कर दो तो चला जाएगा. Yes, sir. Connect किया था. तो यहाँ पे ये दिखा नहीं रहे. So that's why ये आपको और ऊपर से ये क्या बोला ये डोमेन यही है. डोमेन वही है. ज्वाइन जब किए थे यहाँ पे ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ये ट्रस्ट नहीं दे पा रहा. Okay. How to give the trust because आपको वो ट्रस्ट कैसे जाएगा जब तक आप ये reliance.com है और आपका डोमेन ये क्या है
और ऊपर से माला एडमिनिस्ट्रेटर। This one I didn't create. ये आपने खुद से बनाया है कि क्या है? I just created that software deployment on this. What is the password? Password? For what password you give? Mala, M capital Mala at 1 to 3. Capital M. A small. हाँ. At the rate of 1 to 3. We got password. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। We will hack VMware. ठीक है। अभी करेक्ट फर्स्ट से पहले से मैं किया ये तो अपने reliance.com में आपने क्या बनाया है? यूजर reliance.com में बनाया है। आप कौन से डोमेन में हो? माला सेम डोमेन में है? कनेक्ट कर दिया था सर reliance.com से। No. तो ये माला हाइफन क्यों आ रहा है? कुछ गलत है? आधा काम वो किया है आधा काम मैं किया है सर इसलिए वो क्या किया मुझे पता नहीं चल रहा है। ये रिलायंस जहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे आ रहा है माला स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, वो नहीं आना चाहिए। वो नहीं आना चाहिए। reliance.com रिलायंस हाइफन ये बैकवर्ड स्लैश आना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैं अगर इसको लॉग आउट करता हूँ Yes. This is started with Definitely they will support. It's okay, no problem. It will support much more than that. Oh. 32 GB, huh? देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? reliance/administrator। How is selling line? यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? यहाँ पे रिलायंस नहीं आके आपका क्या आ रहा है? वो दूसरा आ रहा है। Sorry. ओके I'll tell you. एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है What in your right? वो माला आ रहा है। माला है फिर ये आ रहा है। आपको क्या करना है? You don't know कोई anything. काम करो। Just you're telling, oh no, that's it. देखते हैं ट्राई मार के, अगर हो पाए तो ठीक। 1 ABC at 1 2 ओके हाँ It's you learning SQL. No. I have to learn SQL. क्या है? ABC at 1 2 Sorry. We'll put him on in the PG. Problem वहाँ है। कोई काम करो। This course SQL is needed. This needed. Database system. नो रेडिट है बाद में Because the DBS for उसको सबसे पहले निकालो। SQL is needed for backend. For Okay. database, skills, Oh. we know that. But Computer name workgroup. for this, we needed. No. We needed Workgroup पे जाओ। this course. इसको workgroup में ट्रांसफर करो। Like SQL is a language. ठीक है? फिर से असाइन करो Okay. Sorry. anyway they don't use SQL. for The this server password? DevOps. అదే మళ్ళా ABC at rate 1 to 3. సర్వర్ ABC at rate 1 to 3. DC0 ఉంది అదేనా हाँ. ABC0 हाँ, 10 million. अच्छा से मिल रहा है माला थोड़ी बनी लग DevOps ये बनी लग language माला. process माला at 1 to 3. ఓకే Capital Did it work, sir? any not any language mostly Right, right. prefer Python. Java also. निकल गया ये? अभी इसको अच्छे से ज्वाइन करो। जब ज्वाइन होगा ABC@123 माला 1 2 3 वहाँ पे कैसा हो गया सर लॉगिन वहाँ पे करेक्टली दिखा है कैसे सर कैपिटल एम कैसे क्या सपना देखा क्या मैंने? एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड एबीसी रखा ना सर आपने मैंने ABC दिया था कि माला दिया था मैंने? अभी माला दिया सर नहीं वहाँ पे मैंने ABC दिया था। वहाँ पे एबीसी दिया सर हाउ डिड इट वर्क सर दो पासवर्ड्स VMware ओके मैं सपना देख रहा हूँ क्या क्या मतलब क्यों कैसे हाँ, you don't Python is tough. माला दिया होगा मैंने यहाँ पर। I know ABC I know. ABC@123 दे रहा हूँ अभी। Oh, you don't. नहीं होगा। Sorry, just you know see not really. माला@123 वही सर एबीसी नहीं सर और DC01 में सेम है एबी माला 1 2 3 You teach me. यहाँ पे ABC दिया था मैंने कैसे हो गई? आई डोंट नो सर अभी फिर से देखते हैं।
कनाडा ही ये सर तो मतलब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो है ये सिस्टम यहाँ पे दिखना चाहिए। जब भी ये सिस्टम यहाँ पे नहीं दिखेगा मतलब ट्रस्ट रिलेशनशिप तो टूट जाता है, वो आपका कोई भी लॉगिन नहीं करेगा। अगर सर्वर है, अगर डोमेन कंट्रोलर जैसा कुछ है, बैकअप वो तो है नहीं, वो सब यहाँ पे आएगा। डोमेन लॉगिन क्लाइंट्स यहाँ पे आएंगे, तभी ये ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे आना चाहिए। जब तक वहाँ पे नहीं दिखाएगा वो लॉगिन नहीं करना है। जी मैं ये अगर फिर से हो गया ना, I'll uninstall that and I'll install again. Okay. दूसरा पासवर्ड कैसे दे दिया भाई? Security. सिक्योरिटी ब्रीच। चलो बग बाउंटी करते हैं सर्वर को। ABC 23. बग बाउंटी करते हैं, यहाँ पे डोमेन के करने से कोई भी पासवर्ड डालो वो लॉगिन हो जाता है। बस मेरे बन जाओ। आई गॉट कैमरा अबो It stopped working. The PC has been unprotected for 752 days. इसको अभी तक अनइंस्टॉल नहीं किया। Escape. We want to go down. दो साल। Because like that, okay. 2 साल वो एंटीवायरस कर दे रहे हैं। आप देखते हैं Brilliance.com. Administrator Malata. ABC ही डालूंगा। For these two languages, नहीं है। English. तो तब कैसे लिया था? I don't know sir I will buy a book. तब आप ABC ही डाले थे सर। हाँ मुझे भी भाई इसने मैं ABC ही डाला हूँ। कनाडा was Okay. Start now. Ask me something in English. I will tell you. ऐसा मैसेज आया था सर पहले भी। Okay. वो रिस्टार्ट होगा। स्टार्ट नो। What is that? This is it. स्टार्ट होने यहाँ पर ही दिखाएगा ना सर अभी रिलायंस। रिलायंस बैकस्लैश दिखाना चाहिए। दिखाया तो आएगा। ఎక్కడ ఉంది అంతే కదా ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ అంటారు ఆయన అడిగింది నాకు అంతా మేనేజ్ చూసండి और P3 it is working good sir. ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది మీ ఇల్లు ఎక్కడ ఓర్ వేర్ ఇస్ सबका मालिक एक మీ ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది VM Pentium 3 प्रोसेसर। 8 GB RAM इसलिए चल रहा है। yes Pentium 3 में इतना फास्ट चल रहा है। वो भी दो लगाया सर 2 VM। I think I want to try to नहीं चाहिए। It's too easy. Language. then tell that word in Kannada ನಿಮ್ಮ ಮನೆ Nimma money. నా ఐపీలో తెలుసా ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ఓ బినా లైక్ See, you're learning. Why are you asking me? ABC 23 we don't he know Kannada he know Telugu he know English he know Hindi but he will not teach us अब कैसे लॉगिन? जादू Like, Magic. money. इंस्टॉल वो भी इंस्टॉल हो रहा है सर मोजिला। ಅದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯೂಸರ್ ಬೇಸ್ ಇರೋಲ್ವಾ तो हाइपर भी करें फटाफट 10 मिनट का काम। So Hyper-V is nothing but is चलो ऐसे समझा। Hyper-V है उसका फुल फॉर्म नहीं है। V is wiser।
So now here we are using VMware Workstation, correct? Yes. Why we use VMware Workstation? Install OS. VMware workstation. To install OS, Use them. to create operating system. To use. Yes, To use OS on. बोलो क्यों यूज करते हैं VMware Workstation? I like to create VM virtual machine, not to create OS, install OS. ऐसा नहीं है. To create virtual machine we use VMware Workstation. एक सिंपल सा ही है, इतना दिमाग लगाना पड़ा है. बना भी रहे हो, फिर भी नहीं पता. सबने देख रहे हो. Why we use VMware Workstation? To create virtual machines. Correct? So we are using third-party application, right? So in server there is an inbuilt virtualizing tool is there. That is called Hyper-V. कोई difference नहीं है. Whatever you do in VMware Workstation, exact same Xerox copy is Hyper-V. But one difference is there. That is, you cannot deploy services with the help of VMware Workstation and provide it to the clients. You can't do it. You cannot create services and provide that service to the client with the help of VMware Workstation. You cannot create your VMs, do the services, configuration, usko client ko do. You can't do it. In Hyper-V, it is possible. In Hyper-V, you can configure one service and you can provide that service to the client. यही डिफरेंस. Rest 99% safe. Clear? Hyper-V is an inbuilt software which helps to create virtual machines. VMware Workstation why we use? Because we don't have inbuilt, so we use third party. दोनों का डिफरेंस ये है. पूरा एकदम ब्रेक डाउन करके मैंने पूरा समझाया. समझ गए क्लियरली? Not clearly, but समझ गए. VMware Workstation पता है ना क्या है? Yes sir. वही Hyper-V है. Yes sir. मान लो सर्वर के अंदर आप VMware Workstation चला रहे हो. Yes sir. नेम इज Hyper-V. बस कॉन्सेप्ट एकदम से. और inbuilt software. yes, it's an inbuilt software to virtualize, to create virtual machines. तो VMware Workstation में तो वही करते हो. वो सिर्फ सर्वर में आता है. हाँ, Hyper-V comes only in server. That's why you can install, you can do it. In client, you have to use third-party software like VMware, VirtualBox. Software मत लिखो, tools लिखो, tool लिखो. Software थोड़ा ज़्यादा बोला था. Software नहीं, इतना इज्जत नहीं दे सकते. Tools. Clear? So how to do this in server? So to do this Hyper-V, you need to again install that. It is a role or a policy? See, not a policy actually. Okay. What we have to install, sir? Let's see. Add roles. Roles. Okay, it is a role. No? Add roles and features. Next. It's a Hyper-V. role. It's a role. And what is the description? Hyper-V provides the services that you can use to create and manage virtual machines And the resource. and their resources. Each virtual machine is a virtualized computer system that operates in an isolated execution environment. ये थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज में बोला है. In simple language, to virtualize machine. That's it. इसका काम हुई. ठीक है? और कोई भी ये सब का मीनिंग हुई. बस ये चीज आप इंटरव्यू में जाके ये हाई लेवल लैंग्वेज मत बोल देना. लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, each virtual machine is a virtualized computer system that operates in an isolated execution environment. We will not tell like that, sir. Hyper-V is an inbuilt software to create VM. That's it. अगर वो बोल दिया ना, वो लोग बोले okay, please explain me how you isolate one VM and create the environment with execution of. बस हो गया, वही पे आता है.
आई माफ कर जाते तो जस्ट सिंपल लैंग्वेज में खत्म करना. So let's install, add features. Validation result. Problem आएगा. Processor does not What we have to do? Issue is what? It's saying Hyper-V cannot be installed. The processor does not have required virtualization capabilities. इसका मतलब ये है कि when we do in our system, when we virtualize, before virtualizing we need to go to BIOS and we need to enable virtualization technology. After that only you can virtualize your system. VM का भी same scene है. In VM also you need to turn on that. How to do it? जाओ VM setting. Processors. Can you see your virtualization engine? Virtualization engine, virtualize Intel, virtualization technology, it's not ticked and it's disabled. Why? Because our system is running. We need to shut down. Oh, ये कौन सा है? पहले ये देख लेते हैं. ये this is 2012 16 ना? Oh, yes, sir, 16. 16 sir, 16 sir. ठीक है 16 ही. ऑन क्यों कर दिया सर? चेंज नहीं किया ना सर. मैंने एक गलती कर दी. मतलब गलती नहीं, मतलब वो नहीं होना एक ही बात था. I was thinking this is 2012. तो मैंने एक एक और इंस्टॉल कर दिया 16. और अभी देखा मैं 16 रन तो हो जाएगा ना सर. ये लो और एक पंडित 2021. इंस्टॉल तो हो जाएगा ना. हाँ इंस्टॉल हो जाएगा. So I will virtualize. Okay. Now power on. Now I will install and I will do the configuration. Now it will get installed. If it is 2012, you will get something like that. Hyper-V cannot be installed as hypervisor is already running. Hyper-V is already running. ये प्रॉब्लम आता है 2012 मतलब GA/ISO में जो है इसका उस पे ये प्रॉब्लम है. वो अज्यूम कर रहा है वो वी आर ऑलरेडी रनिंग विद ऑन VM. हाँ वो एज्यूम कर रहा है Hyper-V ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे क्यों इंस्टॉल करना, लेकिन है नहीं. But with PowerShell if you can install, but when you try to launch at that time it will say that some components are missing. वो launch हो गई नहीं. तो PowerShell कोर्स है सर यहाँ पर PowerShell है लेकिन कौन कर रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन है. यहाँ पर है सर पूछा सर. यहाँ पर पता नहीं, मैं तो नहीं करा और मुझे कमांड लाइन में जाना भी नहीं है. GUI बस है, मजे करो यहीं पे. Actually I wanted to start as a क्या बोलते हैं CLI admin. No, not CLI admin. I don't want to get into networking. तो I want to go for hardware. हार्डवेयर जहाँ स्कोप नहीं है वहाँ जाके क्या कर लोगे. वही बोल के यहाँ पर डाल दिया सर. हार्डवेयर नेटवर्क अभी वो जमाना गया. हार्डवेयर नेटवर्किंग में पड़े रहो, वो जमाना गया. डोंट स्टिक ऑन नेटवर्क लाइक आई वांट टू मेक करियर. क्या Building PCs बिल्डिंग पीसीज and repairing it. उस फील्ड में वो तो अलग हो गया. वो अपना खुद वो खोद सीखने के लिए आया था सर. PowerShell थोड़ी ना सीखने का वहाँ पे आएगा. Want to keep laptop repair center. तब तो आपको सिर्फ हार्डवेयर सीखने से काफी है. तब तो आपका हार्डवेयर सीखने से ही काफी है. हाँ सर वही सीखने के लिए आया था. लेकिन A प्लस के साथ फ्री में ही N प्लस सब कुछ घुस गए. फ्री नहीं सर, ये बोल दिया like you can get job something like this. I don't have any idea about networking. यहाँ पर आने के बाद ही मुझे पता चला नेटवर्किंग क्या होता है. I didn't have any idea about it. ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता. वही तो क्या वेस्ट नहीं जाता. Now I want to be a ethical hacker. Oh my god.
Okay, sir. मोबाइल ही गिर गया. No problem, warrant is there. ओके, जो मैं बोला वो सुन के सुसाइड कर लिया. एथिकल हैकर. आपको पता है एथिकल हैकिंग में जब साइबर सिक्योरिटी में जाते हैं कोई रियल टाइम में हैकिंग नहीं होता वहाँ. ऐसा है ना सर? नहीं होता सर. तो काय के लिए जाना. लाइक सबको बोलने के लिए लाइक आई एम हैकर. वो वैसे भी बोलो ना. किसको क्या पता कि आपने किया कि नहीं. कौन जाना है कि आपको वो देखेगा. डरना चाहिए ना सर. तो एक काम करो छोटा मोटा ट्रिक सीख लो. बोलो कि आप जहाँ पे हो मैं उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ पूरा का पूरा बोल सकता हूँ. बोलो. CH है ना CH पढ़ लेंगे. नाउ सी इट विल बी टिक्ड. नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट कुछ नहीं करना. नेक्स्ट इंस्टॉल. इसलिए GUI बेस्ड है. अभी इसको अगर पावर शेल में करना होता कमांड जितने बार नेक्स्ट मारे हो ना उतने बार कमांड डालना हो. यही बेटर है. लेकिन CLI एडमिन भी होता है. बाप रे बाप. लिखा है फर्स्ट में सर. बाप रे बाप. फर्स्ट में उसको GUI चाहिए ही नहीं. लाइक वन कलीग अभी भी कांटेक्ट में है वो. मैं कभी कभार कमांड पे प्रॉब्लम होने से उसको ही फोन करता हूँ. ही इज लाइक नेक्स्ट लेवल. उसका सिस्टम में एक भी चीज कमांड. उसका OS भी CLI मोड में है. लाइक इन आवर सिस्टम वी यूज Ubuntu यूज करो जो भी यूज करो वी यूज इन GUI. उसके अंदर जो कमांड है कौन है नहीं. उसका पूरा CLI. लैपटॉप भी CLI. MS DOS पता है ना. पूरा ब्लैंक होता है सिर्फ कमांड डालो. वैसा है उसका लैपटॉप. वो कमांड डालेगा कॉपी करना है सब कॉपी पेस्ट सब कुछ चलेगा. एवरीथिंग इट विल रन थ्रू कमांड. लिनक्स में करना आ जाएगा. दैट्स हाउ बिल गेट्स. उसको पूरा पता है लिनक्स. और लिनक्स पेपर में जो चीज नहीं है वो उसको पता है. लेकिन GUI के अंदर आएगा वो ब्लैंक हो जाता है. वो क्या है कहाँ है. जैसा हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं कमांड में. वो GUI आने से उसको ब्लैंक हो जाता है. उसको ये भी नहीं पता भाई दिस PC किधर है. वो जाके डायरेक्ट सीधा पावर शेल ऑन करके बात कर दिस PC. तो ये है होता है किसी का दिमाग इस तरह का अडॉप्ट कर लेता है कि दे ओनली वांट दैट ओनली. दे कांट डू बियॉन्ड दैट. उसको सिंपल कर देंगे उसको जमेगा नहीं. तो उस काइंड ऑफ गाय वांट कॉम्प्लेक्सिटी. लाइक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. है इतना दिमाग उसके बाद. बाप रे. सो रिस्टार्ट इज पेंडिंग. रिस्टार्ट कर लो एक बार. कौन सा सर जो सर एक डाउट है सर. लैपटॉप्स ऑनलाइन मिलता है सर. वहाँ पर OS DOS लिखा होता है और जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. उसको डिलीट फॉरवर्ड करके डाल. DOS का मतलब लाइक पाइथन MS DOS मतलब वहाँ पे कमांड लाइन CD MKDR ये सब यूज होगा. सही नहीं है और कुछ नहीं. तो चीपर है सर लैपटॉप DOS. समझेगा DOS वाला लेके. DOS वाला पूरा कमांड पे चलता है. पहले तो हम लोग वही करते थे. पहले जो पहले क्या था लाइक बिफोर लाइक HS टाइम्स मतलब हम लोग को इतना पता है मतलब वी आर लाइक गॉड. और जिनको नहीं पता दे विल लाइक अरे बाप रे इतना तो पता है. आप बोलो व्हिच लैपटॉप आई शुड बाय प्लीज. मैं एकदम दौड़ के आते हैं. वहाँ पे लिखा था MS DOS. मतलब ले लो. MS DOS क्यों लेने देते थे उसका कारण अलग था. हमको पॉकेट मनी निकालना था. MS DOS लेंगे they will not don't know how to use. They will come to me only. Please install one operating system. So what I do, I install customized operating system. At that time, one antivirus was there. I asked. We can get license free for 1 year. तो मेरा फंडा ये था. They don't know. तो मैं क्या करता था? I install customized operating system and I tell them, you should have one antivirus. नहीं तो वायरस खा लेगा. Okay, I have antivirus. It will charge no. No problem. I will provide 1 year license.
but this is a charge, but free. बस 1500 रुपए 1500 rupees पॉकेट मनी आ गया. तो in our area everyone knows if anything happens in computer, Kunal go to Kunal's home. बस मेरा दिन में बढ़िया से जुगाड़ हो जाता. Tell your home address, we will also come. गुवाहाटी असम. Assam. Assam where, sir? Guwahati. असम वेयर. Start from house, door number, street, area, everything. क्या करोगे जान के? जाओगे तो नहीं कभी. पिज्जा डिलीवरी हाँ फैमिली के लिए पिज्जा डिलीवरी हाँ पिज्जा डिलीवर पिज्जा. ऑर्डर इट, गिव द दिस वन एड्रेस. तो तब वो सीन दिन में बढ़िया से 2-3 के आ ही जाते थे क्लाइंट. ये लैपटॉप लेके आओ, ये डेस्कटॉप. एंड तब दिस वाज एल्बम वाज देयर. एल्बम व्हाट केम. ओके. तो एल्बम में मेरा ओएस रहता था. ऑल ओएस अभी भी है. विंडोज 95 भी है मेरे पास. मेरे पास भी है 95 है 95 98 XP XP सर्विस पैक 1 सर्विस पैक 2 सर्विस पैक 3 सब कलेक्ट करके रखा. लेकिन अभी तो क्या है. मेरे पास भी है सर डाउनलोडेड. अभी तो ऑपरेट अचार बना लोगे तो मेरे को बोलना. अचार बना लो. परे हुए काम कुछ नहीं आ रहा है. रन ಮಾಡ್ತಾರೆ. हाँ एकदम. उसके बाद ऑफिस दूसरा मीटर आ रहा हां सर 2007 7 అవసరం వస్తే 2007 बाप रे. So Hyper-V is installed. Now here you need to do one thing. To run any VM, you need to create one virtual switch. One virtual switch you need to create. So how to do that? Go to Tools, Hyper-V Manager. This is your Hyper-V Manager. From here only you will create VM, launch, do whatever you want. देयर सर्वर मैनेजर. क्या सर्वर मैनेजर? टूल्स में जाके Hyper-V में जाना है. हां यहां वो आ रहा है. हाँ. Under DC you will see no virtual machine was found, nothing, कुछ नहीं है. You need to first configure this. So what to do? Can you see here virtual switch manager? Click on virtual switch manager. Right now new virtual switch, nothing is there. So we need to create one. So how to create? Go with the internal. Internal, create virtual switch. If you want to give name, you can give name. It's your choice. देता हूँ switch. Then apply. इसको दिवाली है, दिवाली लेवल. Advance. Done. Now if I go and check, I will get this. What I am getting? V Ethernet. Now your Hyper-V will work with this virtual switch. That means what? Your management will be different and your VM traffic will be different. तो अभी अगर VM बनाना है तो we need one ISO. So we need to drag and drop over here inside the VM ISO. It will not take your physical. क्या करेंगे? जाते हैं. कोई भी एक उठाओ. For example. हाँ यही है. हाँ.
तो आज फर्स्ट पेपर खत्म। सेकंड पेपर मंडे से या कल से ही है? आप बताओ। कल से ही मंडे से स्टार्ट सर। तो प्रैक्टिस करना She said practical not done. सैटरडे Today, tomorrow and tomorrow we will practice this. प्रैक्टिस करना Today's we will practice and Saturday Tuesday she said practical. And Monday आज क्या है? आज फ्राइडे क्या है? वेडनेसडे। थर्सडे फ्राइडे विल प्रैक्टिस। Yes. Saturday Saturday 6 a.m. I will do. But Saturday there is a timing, not whole day. Till 2. from 8 You come at whatever your time you come. Don't call me. I will come by 10 only. So if you want, come by 8. Come early. Sit. Do. Everything is configured. सब ठीक हो गया. सारा का सारा reset करना होगा. Now it's perfectly working. ठीक है? आके start कर देंगे. Okay, so we have got our ISO. Now let's create one virtual machine. So how to create new virtual machine? Same process. Next, give name test for example. Next, generation 1, generation 2. Generation 1 is like MBR. Generation 2 is like GPT. क्या सर बोलता है? MBR GPT नहीं पता? आज गूगल करके देखना. क्या सर क्या बोले सर? एमबी MBR and GPT. मास्टर पार्टीशनिंग सिस्टम. Partitioning system, master boot record, or you can say partition scheme. Master boot record and GUID partition table. आज घर पे जाके देखना. So we need to go with the generation 1 only every time. जी. Generation और MBR है, generation 2 है, GPT है, but in real time always generation 1 works. You should never go with GPT because when it comes under Hyper-V. Then next, how much memory you want to give, and this memory will take from your VM, not from a physical machine. Okay. So in VM, if you have given 2 GB, it will not work. At least your VM should have 4 GB, so that here you can assign 2 GB. Otherwise, Hyper-V will not work. So here minimum 2 GB is mandatory. Next, connection. We have created vSwitch, right? So, vSwitch. Next, how much hard drive space? It will take from your VM. दे दो, कितना देना है? 10 GB. काफी है. आप दो गुलो भी देना है आपको इच्छा. 10 GB में, हाँ? 10 GB में इंस्टॉल होगा विंडोज 10. 10 के लिए तो कितना चाहिए? 6 GB. 6 GB भी नहीं चाहिए. 6 to 7 ही चाहिए. काफी है. Next, like we install ISO, we attach ISO in our VMware. Here also I need to image file, browse. I have already desktop में है, open. Next, finish. बस. यही काम. What? What? Why are you disturbing me? What happened? है? क्या हुआ? Nothing, sir. No, sir. Telling that virtual machine you have to take 2 GB. Then. You take get 4 GB. It will sleep definitely. That's वो तो obviously. If it will sleep, that will go to VM coma. at least 4 GB you need to take, and to run Hyper-V 2 GB you need to assign. If you give 1 GB, it will not work. So now let's launch. So how we will launch this? Down you will see, right side down, test connect, it will be written. Connect will be there. Right down, right side down, left side नहीं बोला है. test में आ जाता. Right down, connect. You will get one console here. Now power on. डिजाइन अच्छा है सर ये. This UI is good, sir. Connected to test.
or PR. Connected to test. Connecting to test. How many hours it will take? Done. Okay. It will install now. Same like VMware OS. But we have to give 4 GB. 4 GB to your VM. VM, so that you can keep 2 GB here. करने के बाद जो बोला टेस्ट ड्राइव करो तो ये होता है हाइपर वी. So 2 days you will practice. Thursday, Friday, and Saturday, Saturday, CCNA. CCNA practical. I'll come on Saturday, sir. and Monday. Saturday. Server ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ದು ಐತಲ್ಲ एक बार में मंडे को आ जाना. नहीं तो कल आ जाओ. ऐसी मजाक करेंगे. Second, third, వేరే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా టూల్స్ యాడ్ క్లోజ్ అయింది ऑफिस से लिया है. है 16 GB का है, ठीक ही चल रहा है.